A very good morning to all children. Today we are going to do remaining questions of exercise 11b. So let's start with equivalent decimals first. Let's understand what are equivalent decimals. For example, 0.4 and 0.4. We have to identify both are equal or not. So yes, both are equal numbers. And why? You can compare it like this. 0.4 can be written as 4 by 10 because ये 10th की place पे है after decimal point first place, and 0.4 is also 4 upon 10. That's why both are equal numbers. For example, 0.40 and 0.400. Again, these are equal. The reason is we can write this 0.400 like 0000 and so on. यानी हम डेसिमल के बाद में अगर कोई डिजिट है और उसके बाद में अगर ज़ीरोज़ हैं तो वो ज़ीरोज़ हम कितने भी यूज़ कर सकते हैं, हम कितने भी ज़ीरोज़ वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. और यू कैन से कि 0.40 में एक एक्स्ट्रा अगर हम ज़ीरो लगा दें, इट डजेंट मैटर. ये 400 है, ये भी 400 है, बट आफ्टर डेसिमल पॉइंट we read the numbers separately like 400, 400, so these are not 400, right? Or you can say 0.40 जब हम इसे expanded form में लिखेंगे, this will be 4 by 10 plus 0 by 100, and this will 0.400 will also be 4 by 10, 0 by 100, 0 by 1000. So zeros की तो कोई value ही नहीं है. So again this will be 4 by 10 and 4 by 10. That's why both are equal. Now see this example. 45.098 and 45.98. These are not equal. And the reason is 45.098 can be written as 40 plus 5. Then 0 is the first place, so 0 by 10. 9 second place, 9 by 100. 8 third place, 8 by 1000. For this one, 45.98, 40 plus 5 plus 9 by 10 plus 8 by 100. So यहाँ पे एक ज़ीरो नहीं है. आगे हम ज़ीरो कभी भी नहीं लगाते. हम इसके पीछे अगर लास्ट प्लेसेस पे अगर हमें ज़ीरो लगाने होते तो वो हम लगा सकते हैं, बट आगे हम ज़ीरो अप्लाई नहीं कर सकते. सो आफ्टर डेसिमल पॉइंट देयर आर 3 डिजिट्स, आफ्टर डेसिमल पॉइंट देयर आर ओनली 2 डिजिट. और अगर हम इसे 3 डिजिट भी बनाएंगे, सो दिस विल मेक 9, 8 एंड 0, नॉट 0, 9, 8, राइट? दैट्स वाई बोथ आर नॉट इक्वल. In question number 8, it is given fill in with the short form or decimal form. So हमें ये जो expanded form है इसे decimal form में convert करना है. First is given 5 by 10 plus 8 by 100. So remember one thing, when the numbers are like this, like in the denominator there is 10, 100 and 1000. So वो सारे number after decimal point वाले numbers हैं. Now in this one, this is the first place, 10th place, and this is the second place, 100th place. So we can write this number like 0.5 and 8. After decimal point first place is 5, after decimal point second place is 8, and before decimal point we can write 0. Or if you are writing like this 0.58, this will also be correct because both are same. Now in this one, 7 by 10, 0 by 100 and 8 by 1000. So again these numbers are after decimal point, so we will write it like this 0.708. This is the 10th place, first place after decimal point, second place and the third place. Now in this one, 300 plus 40 plus 1 plus 0 by 10 plus 1 by 100 and plus 2 by 1000. So we can write these number as 341 in the short form, then decimal point, and after decimal point first will be 0, then 1 and then 2. So the answer is 341.012. Similarly you can do other two parts. In question number 9, compare and fill in with greater than, less than or equals to sign. So we have to compare these decimal numbers over here. A part is given 0.5 and 0.09. So first of all you have to compare before decimal point. आपको बिफोर डेसिमल पॉइंट के जो नंबर्स दिए हुए हैं उसे कंपेयर करना है. इफ बिफोर डेसिमल पॉइंट द नंबर्स आर सेम, यू विल सी आफ्टर डेसिमल पॉइंट नंबर्स एंड देन you will compare. So first of all this one, before decimal point both are zeros, and now after decimal point it is given 5 and after decimal point it is given 0. So obviously this 5 will be greater than, and we will use this sign.
Then in B part, 1 and 0.999. So this one is whole number. We can write this one as 1.000 and so on. And this is 0.999. So in this one, 1 will be greater because before decimal point here it is given 1 and here it is given 0. So again this one will be greater than. Then in C part, 0.04 and 0.004. So first of all, before decimal point no number is given, so we can put 0 here over here. Now these are same, and after decimal point it is given 0 and यहाँ पर भी क्या है, 0 है. Now we will compare the second place. Second place is given 4 here and second place is given 0 here. So second place के according this one is bigger than this one. That's why this 0.04 is greater than 0.004. In this one, 5.32, 5.41. So before decimal point it is given 5 and now we are going to compare after decimal point. So after decimal point here it is given 3 and here it is given 4. So this will be greater. So we will use this sign. Now in this one, 0.77 and 0.770. So this I have told you earlier that ये जो है 77, इसमें अगर हम extra 0 लगा देंगे, this and this will be equal because आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो डिजिट्स हैं और हम उसके बाद में कितने भी जीरोस अप्लाई कर सकते हैं. सो बोथ आर इक्वल. देन इन दिस वन 0.54 and 5.4. So before decimal point nothing is given, so we can put 0 over here, and before decimal point it is given 5. So obviously this 5.4 is greater. In this one 0.197 and 0.197. So यहाँ कुछ नहीं है इसलिए हम 0 लगा सकते हैं. Now both are same. So we'll use equals to sign. In this one 2.009 and here it is given only 2. So this is whole number and after decimal point there is only zeros. So now see 2.001 and here it is given 2.0000. So यहाँ पे 1 नहीं आया third place पे. That's why this 2.001 is greater than this 2. Similarly, you can do other parts. Next question, question number 10 and 11 is related to, we have to write these decimals number into ascending and descending order. So while we are writing decimal numbers into ascending and descending order, first we have to convert it into equivalent fractions. And how? See, in A part is these decimal numbers are given. So we will write it like this form. Like we have to write this decimal point in the decimal point position, just like आपको decimal point के नीचे decimal point ही लगाना है, and then you will write numbers like this and then we will convert it into equivalent fractions like this. इसके आगे कुछ नहीं था इसलिए हम क्या लगा देंगे, 0. इसके पीछे कुछ नहीं है इसलिए हम एक एक्स्ट्रा 0 लगा देंगे बिकॉज आफ्टर डेसिमल नंबर यहाँ 3 डिजिट्स हैं एंड यहाँ पर भी 3 डिजिट्स हैं. सो हमें सब में भी क्या करने हैं, 3 डिजिट नंबर्स ही बनाने हैं. सो इट विल बी 0 0, 2 extra zeros, and this one again 2 extra zeros. Now these are equivalent fractions, right? हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने भी हायर डिजिट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिजिट्स लगा देंगे और अगर एक्स्ट्रा डिजिट नहीं है तो हम वहाँ पे 0 लगा देंगे. नाउ वी हैव टू राइट इट इनटू असेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू बिगर. नाउ विच वन इज द स्मॉलर वन हियर? This one, this 0.071. If we will compare all these fractions, this will be the smaller one. So we are going to write 0.071 first, or you can write this form 0.071. Then what will be the next number? Now इससे जो greater है वो कौन सा number आ रहा है? So इससे जो greater होगा this one 0.710 because बाकी के जो है उसमें बिफोर 0.71 and 1 आ रहा है एंड बिफोर डेसिमल पॉइंट 0 सिर्फ इसमें ही आ रहा है. सो दिस विल बी द सेकेंड वन 0.710. सो वी आर गोइंग टू राइट 0.710. देन इट विल बी 1 बिकॉज 0 के बाद अब 1 आता है. सो इन दोनों में से कोई नंबर आएगा. नाउ वी हैव टू कंपेयर दीज टू नंबर्स 1.700 and 1.071. सो दिस वन इज द स्मॉलर वन. So we are going to write this one 1.071. Then this one 1.700.
So 1.700, and then at last we will write this number. This is the greater one or larger one. So 7.100. So 7.10 and 0. Now see, ये जो फॉर्म थे ये सब कौन से हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाले फॉर्म है. इसके जो रियल नंबर्स हैं वो ये है. सो आप ये भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के बाद, और यू कैन राइट these numbers also. So we can also write like this one. This one was this number 0.071. Then this number is this one 0.71. So you can write 0.71. Then 1.071 is as it is. So 1.071. Then this 1.700 is only 1.7. So we will write 1.7, and at last 7.100 will be 7.1 only. So 7.1. So आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाली फॉर्म या जो इसके रियल नंबर्स है वो वाली फॉर्म भी लिख सकते हैं एज अ आंसर. Similarly, in question number 11, write in descending order. Again we have to make it or convert it into equivalent fractions. So before decimal point nothing is given, so we can write zeros before decimal, and then आफ्टर डेसिमल पॉइंट 3 नंबर्स आर गिवन इन ईच, सिर्फ इसको छोड़ के. सो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लगा देंगे इसके पीछे? 0. नाउ वी हैव टू कंपेयर एंड देन वी हैव टू राइट द नंबर्स फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर, बिकॉज डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स लार्जर टू स्मॉलर नंबर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विच वन इज द लार्जर वन? सो सभी के पॉइंट के पहले क्या है? जीरोज है. सो वी विल कंपेयर आफ्टर डेसिमल पॉइंट. सो आफ्टर डेसिमल पॉइंट सबसे बिगर क्या आ रहा है? दिस 3 एंड दिस 3. एंड नेक्स्ट अगर यहाँ पे दोनों सेम है तो हम नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करेंगे, दैट इज 4 हियर एंड इट इज 0. सो दिस वन इज द लार्जर वन, दैट इज 0.340. सो 0.340, और यू कैन सिंपली राइट 0.34 बिकॉज ये क्या था? 0.34 ही था बिफोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. देन दिस वन इज द बिगर वन 304. सो 0.304. देन अब इससे छोटा नंबर क्या होगा? आफ्टर डेसिमल पॉइंट इट इज गिवन 1 हियर इन दीज टू एंड इट इज गिवन 0. सो ये 1 वाले जो होंगे हम वो लिखेंगे. नाउ कंपेयर आफ्टर डेसिमल पॉइंट दोनों में 1 था, सो वी आर गोइंग टू कंपेयर द सेकंड प्लेस, दैट इज 3 एंड 0. सो दिस वन इज द लार्जर वन फ्रॉम दिस वन. सो वी विल राइट 0.134, 0.134, and after that 0.104, 0.104, and at last we will write this 0.034. So 0.034. You can write the actual number also. All right. See, like this you can make equivalent decimals, and then you can order it as ascending and descending order. Like I have solved 3 parts of question number 10 and 3 parts of question number 11. Now rest 2 parts you will do on your own. In next question, question number 12, filling the blanks, we have to convert some paise to rupees. A part is 75 paise. You have to remember this thing, when you will convert paise to rupees, you will divide it by 100, and when you are converting rupees to paise, you will multiply it by 100. So in this one, 75 paise, we have to convert it into rupee. So पैसे को जब हम रुपी में convert करें, what we are doing? We are dividing it by 100. So similarly you have to divide this 75 by 100. अब इसमें जब आप divide करेंगे तो आप इस टाइप से divide करके solve नहीं करेंगे. You have to put a decimal point 2 digit before, because 100 में 2 zeros होते हैं. So we are going to put a decimal point 2 digit before from right to left. So it will become 0.75. So we can write 0.75 rupee. In this one again we will divide it by 100 because we are converting paise to rupees. So again 650 divided by 100. Again we are going to put a decimal point 2 digit before from right to left. So it will become 6.50. That means ये 0 और 5 से पहले हम क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट को अप्लाई करेंगे. सो द आंसर विल बी रुपीज 6.50. In C part it is given rupees 8 and 50 paise
and we are going to convert it into rupees totally. सो यहाँ जो ये 8 रुपीज़ है हम इसे चेंज नहीं करेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी किस में है, रुपीज़ में है. वी आर गोइंग टू चेंज दिस पैसे. सो दिस 50 पैसे विल बी 50 बाय 100 and this 8 will be added to this one. Now as you can see, this is the expanded form of decimal number, right? So this will be 8 point, now here 0 are 2. Now here 2 zeros. So according to 2 zeros we are going to put a decimal point 2 digit before. So यहाँ 0 और 5 से पहले decimal point आ जाएगा. So ये 5 0 जो होंगे after decimal point लिखे जाएंगे. So the answer is rupees 8.50. Similarly you have to solve rest 3 parts of question number 12. So children, this is your homework. You have to do question number 8, 9, 10, 11 and 12 in your book only of this exercise, and you are going to solve this question number 10 and 11 in your rough notebook. अगर आपको कोई भी confusion होती है तो आप पहले rough notebook में इन questions को solve करेंगे and answers you are going to write in your book only. So complete your homework on time. Have a good day. Thank you.